पीके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ मु। तो पिला माने आज आम गोटे क्लास करवा जोड़ा कि आपणकर ओएसएससी सीजीएल मेन्स पे आपणकर क्लास टी रहिबो। तो ये आप देखिपे आज क्लास आम डिस्कसन हम कौन ना जनरल स्टडीज उपर आम आज डिस्कसन करवा। तो टोटाली आपणकर ये एमसीक्यू रहिबो कारण आपण जानिथिबे वर्तमान नोटिफाई अनुसार बुझिला। तो वर्तमान नोटिफाई अनुसार आपणकर मेन्स एग्जाम रो पैटर्न कौन होइछि एमसीक्यू हो जाइछि। ओके तो जहाँ भी आम करवा एमसीक्यू टाइप रो सॉर्ट आउट करवा। ओके तो डेरी नस्ट करी चलते स्टार्ट करवा आज क्लास जनरल स्टडीज फॉर ओएसएससी सीजीएल मेन्स एग्जामिनेशन। देख फास्ट क्वेश्चन अच्छी कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि आपको टोटाल 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन एटा आसीबो। देख फास्ट क्वेश्चन अच्छी चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज यूनियन पावर कमिटी रो चेयरमैन किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो। तो ये जी के ना पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देख द टर्म सेक्युलर was added to the preamble of the Constitution of India by the 42nd Constitutional Amendment Act in the year। तो कौन होता ना 42nd Constitutional Amendment Act अनुसार प्रिएम्बल रे कौन होता ना सेक्युलर टर्म रो एडिशन होता। तो 42nd अमेंडमेंट केबे होता 1976 72 80 85। तो ये आसीबो केबे 1976। नेक्स्ट देखो द सोनो सिंह कमिटी हैड सजेस्टेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए टोटल ऑफ डेस फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सोनो सिंह टोटल केतेटा फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन करते सजेस्ट करते टोटल केतेटा फंडामेंटल ड्यूटी से सजेस्ट करते आसो केते देख पे कहे तो ताको सजेशन रे माने सोनू सिंह कमिटी अनुसार तो ताके केतेटा रिकमेंडेशन करथिले टोटल केतेटा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो एटा आंसर हे जबो कोन 8 बुझ एटा मु एक्सप्लेनेशन डी कर दोछि। देखो ताके 8 सजेस्ट करथिले बुझला ना 8 फंडामेंटल ड्यूटी कोन करथिले सजेस्ट करथिले। नेक्स्ट कोन हला टोटल 10 एडेड हैला बुझला ना नहीं टोटल केतरा 10 टा एडेड हैला। नेक्स्ट कोन हला जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आसला है सीएए आसला। तो 86th सीएए रे कौन है जोटा कि 2002 रे आसला। तो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी केते हैला ना टोटल हैला 11। ओके एइथिरे कंफ्यूजन नाही कारण सोनू सिंह कमिटी टोटल 8 रिकमेंडेशन करथिले किंतु लेटर देयर आर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आर एडेड। तापर 86th सीएए रे आपनर आसला कोन 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट देखो देयर आर यूजुअली 3 पार्लियामेंटरी सीजन इन इंडिया द बजेट सीजन द मॉनसून सीजन एंड डैश। तो तीनटा होची कोन पार्लियामेंटरी सीजन गोटे होची बजेट सीजन गोटे मॉनसून आ गोटे विंटर समर फाइनेंशियल कोन आसीबो। तो एटा आसीबो कोन विंटर सीजन आसीबो। नेक्स्ट देखो हाउ मेनी राइट्स आर मेंशन अंडर राइट टू इक्वालिटी। तो टोटल केतटा राइट अच्छी राइट टू इक्वालिटी रे टोटल केते जो टोटल नंबर हो 5। नेक्स्ट देखो फ्रॉम व्हिच कंट्री द आइडिया ऑफ प्रिएम्बल वाज बोरोड। तो प्रिएम्बल को कंट्री रो बोरो होइछि यूके यूएसए यूएसएसआर ऑस्ट्रेलिया। तो आसीबो कोन यूएसए हला यूएसएसआर देखो पिले प्लानिंग कमिशन जानथिबो बुझिला ये जो कौन यूएसएसआर। नेक्स्ट देखो आम टे इकोनॉमी पढ़ेले है। नेक्स्ट देखो द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू व्हिच लिस्ट। एजुकेशन एजुकेशन स्टेट लिस्ट यूनियन बा बोथ स्टेट एंड यूनियन और कंकरेंट लिस्ट। तो एजुकेशन आसीबो कोन ना कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट देखो द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन व्हिच आर्टिकल। Constitutional amendment is provided in which article? CAA Constitutional Amendment Act। आसीबो एटा कोन
368 आर्टिकल। नेक्स्ट देखो, which article of the Indian Constitution is related to abolition of untouchability? तो अनटचेबिलिटी को आर्टिकल रे अछि? 16, 17, 18, 19। तो ये आसीबो कोन? आर्टिकल 17। ओके, देखो आर्टिकल 60 कथा हम देखिदबा। आर्टिकल 16 रे कोन देइछि? तो आर्टिकल 16 आसीबो कोन? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। बुझिला? इक्वालिटी आसीबो होला। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे कोन आसीबो? इक्वालिटी आसीबो। नेक्स्ट 17 कोन हला? अनटचेबिलिटी। 18 कोन आसीबो? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स होला। नेक्स्ट 19 आसीबो कोन? फ्रीडम ऑफ स्पीच आसीबो। ओके, एति जिंस आपण मन रखिबे। नेक्स्ट, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। तो एटा के आसीबे? ऑब्वियसली गवर्नर। नेक्स्ट देखो, हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स enumerated in Indian Constitution? Who is the guardian of fundamental rights? Ke is wede? High Court, Supreme Court, President, Prime Minister. Option आसीबो कोन? Supreme Court. Next देखो, during emergency which fundamental rights cannot be suspended? The fundamental rights emergency समय को fundamental rights कोन हो? Suspended होबनी। हमें वर्तमान पॉलिटी रो रिसेंटली करि चंदी, आपण भाबी चिंती के आंसर देबे। तो ये आसीबो कोन? आर्टिकल 20 एंड 21। तो पिला आर्टिकल 20 कोन डिस्कशन कर दो आडिके। जदि आसी चंदी एडिके तो डिस्कशन कर दो आडिके कोन आर्टिकल 20 एंड 21। तो आर्टिकल 20 कोन आसीबो? ऑफेंसेस हला। ऑफेंसेस एंड कोन सेफगार्ड्स प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। बुझिला? आ आर्टिकल 21 कोन हिजिबो? लाइफ एंड लिबर्टी। बुझिला? शॉर्ट रे आपण मन रखिबा एबे, लाइफ एंड लिबर्टी प्रोटेक्ट्स द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो आसीबो कोन? आर्टिकल 21। नेक्स्ट देखो 13, द फॉरमोस्ट राइट एमंग राइट्स टू फ्रीडम इज? द फॉरमोस्ट राइट एमंग राइट टू फ्रीडम। तो आसीबो कोन? ये आसीबो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जोटा कि आर्टिकल 21। नेक्स्ट देखो 14 कोन कहछि? इन द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन this assure the dignity of the individual. In the preamble of the constitution this assure the dignity of the individual, liberty, fraternity, equality, justice. तो ये आसीबो कोन? justice. नेक्स्ट देखो, when did drafting committee publish the first draft of the Indian constitution? तो drafting committee first draft of इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे पब्लिश करथिले? तो ये आसीबो केबे? फेब्रुअरी 1948। नेक्स्ट देखो 16, हाउ मेनी सीट्स ऑफ राज्यसभा आर प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? हाउ मेनी सीट ऑफ राज्यसभा आर प्रेजेंटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र? 19, 10, 31, 25। तो ये आसीबो केते? टोटल 19 सीट्स। नेक्स्ट 17 देखो, to safeguard public property and to abjure violence is a dash in the Indian constitution. Fundamental duty, social ethic, fundamental right, directive principle of state policy बा DPSP हला। आको हमें कोन कहबा? DPSP। तो कोन हिजो ये? तो ये आसीबो गोटे कोन? फंडामेंटल ड्यूटी हला, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्यूर वायलेंस इज ए डेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखो, द फंडामेंटल ड्यूटीज एड्रेस टू द डेस्क गवर्नमेंट डेस्क द हाँ से कह, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एड्रेस टू द डेस्क गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, स्टेट, सिटीजन्स। द फंडामेंटल ड्यूटीज क्या पे?
जदि आप राइट्स नहीं है जदि आपन को कौन जस्टिस मिल जाव ताल आपणर कौन अच्छी किसी फंडामेंटाल ड्यूटीज अच्छी है देश आपणर किसी कर्तव्य अच्छी तो से आसो कौन सिटीजन्स व्हाट डज द रीट ऑफ मैडम मस्ट रीट मैडम मस्ट मीन्स कौन we command by what warrants you may have the body to be certified तो 19 कौन आसो तो मैडम मस्ट मीन्स हूँ कौन we command नेक्स्ट देख 20 कौन कही it is the duty of every citizen to uphold and protect the death unity and integrity of India it is the duty of every citizen to uphold and protect the death unity and integrity of India autonomy नेक्स्ट आसला कौन अथॉरिटी सॉवरेनिटी एंड प्राइवेसी तो ये आसो कौन सॉवरेनिटी है तीन टा वर्ड आप मन रखिए सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बुझला यार आपको सीरियल टी भी पचारि पारे कोटा पर कोटा आसो है प्रिएम्बल आप भलसे ही देखी जाइए है प्रिएम्बल जो जो वर्ड लिखाई तार ऑर्डर आप देखी जाइए भलसे है क्वेश्चन से भी आसो आप नेक्स्ट पिले देख इंडियन इकोनॉमी इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो ये अच्छे आप 20 मार्क या पर आम आज गोटे डिस्कसन करवा तो आप पूरा गोटे कौन मॉक जमी आसूँ आप पेपर सेमती देख देखिए हु कॉइंड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी हु कॉइंड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर द इंडियन इकोनॉमी राजकृष्ण आडम स्मिथ मिल्टन फ्राइडमैन अल्फ्रेड मार्शल तो ये आसबे कि ना राजकृष्ण इयर हो के 1978 ओके नेक्स्ट देख द कोरबा कोल फील्ड इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट कोड़े जीव ओडिशा वेस्ट बेंगल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र तो ये आसो कोड़े ना छत्तीसगढ़ नेक्स्ट देख द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन तो ये आसो के 2005 2000 2010 2004 तार आंसर हो कौन ना 2005 ओके देख जदि डेट पचारा लिखे है जदि डेट सहित आसला यदि दीटा मन रखिए बुझला लॉन्च्ड बाय कार द्वारा ना प्राइम मिनिस्टर बुझला आउ कौन आसो यार एम बा प्रोवाइड कौन करे एम भी आपको MCQ पचारि पारे बुझला कौन ना प्रोवाइड एसेसिबल एफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर बुझला ना नहीं कम दरमा मान सॉरी कम खर्च भल सुविधाजनक कौन हेल्थ फैसिलिटी दबा हो कौन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन रो मुख्य एम थिला बुझला जदि आप कहे लिखि दूचे ये कौन एसेसिबल एफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर है बुझला ये मन रखिए नेक्स्ट देख व्हिच बैंक वाज earlier called the imperial bank of India which bank was earlier called the imperial bank of India Bank of Baroda Bank of India RBI SBI कौन पार तो ये आंसर हो कौन SBI जदि ईयर आपको पचारे कौन हो 1955 नेक्स्ट देख इन व्हिच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड इन व्हिच ईयर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड केबे पार 1949 50 35 47 तो ये आसो के 1949 1 जनवरी है ईयर मन रखिए नेक्स्ट देख कौन दे हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द 10th 5-year प्लान जवाहरलाल नेहरू मनमोहन सिंह अटल बिहारी वाजपेयी द्रौपदी मुर्मू तो पहले जदि 10th 5-year प्लान आसो तो ईयर केबे हो
2002 ରୁ 7 ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲା? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ପ୍ରାଇम ମିନିଷ୍ଟର କିଏ ହେଇଯିବେ ନା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜपेୟୀ ହେଇଯିବେ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଦ ଇଷ୍ଟର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କିବିଥୁ, ଗହରମତି, ଇନ୍ଦ୍ରକୋଲ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏବଭ। ଇଏ ହେଇଯିବ କ'ଣ କିବିଥୁ। ବୁଝିଲା? ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥାଇପାରେ କିବିଥୋ ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା, ଡବଲ ଓ ବା ଓ ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଇଏ ଆସିବ କୋଉଠି? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ମନେ ରଖିବେ ହେଲା, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଆସିବ କ'ଣ କିବିଥୁ। ଓକେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରେ ଅଞ୍ଜୁଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା, ଅଞ୍ଜୁଆ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ANJAW। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦ ଭୂପେନ ହଜାରିକା ସେତୁ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଧୋଲା ସାଦିଆ ବ୍ରିଜ which connects Assam and Desh. The Bhupen Hazarika Setu also called Dhola Sadia Bridge which connects Assam and Desh. Tripura, Arunachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir. କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସେଇ ଆସିବ କ'ଣ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ବୁଝିଲେ? 28 କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ପିଲେ, ଆର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବା, ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ତାର ଟିକେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପାର୍ଟ ମନେ ରଖିଦେବା। ଲେନ୍ଥ କେତେ ହେଇଯିବ? 9.15 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିଲା? ରିଭର କେଉଁ ହେଇଯିବ ନା ଲୋହିତ ରିଭର ଉପରେ ଇଏ ଅଛି। ବୁଝିଲା? ତ ଲୋହିତ ରିଭର କାର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ? ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟାରୀ। ବୁଝିଲା? ଏତିକି ଜିନିଷ ଏଇଟା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ବାଟିକି ପିଇଦେବେ। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି? ଦ ଧୂଆଁଧାର ଫଲ୍ସ ଆର୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଡେସ୍ ରିଭର। ଦ ଧୂଆଁଧାର ଫଲ୍ସ located in which river? ତ କ'ଣ ଆସିବ ଏଠି? ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ ନର୍ମଦା ରିଭର ଆସିବ। ବୁଝିଲା? ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଜବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଓକେ। ଏତିକି ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। Shifting cultivation is also known as dash in northeast India. Zooming, terrace cultivation, agroforestry, crop rotation. ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସିଏ ଆସିବ କ'ଣ zooming। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, according to the census of 2011 the male literacy rate in India is। According to the census 2011 male literacy rate in India ତ କେତେ ଆସିବ ଏଠି? 82.14 ଫର୍ ମେଲ୍ସ। ଯଦି ଫିମେଲ୍ସ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ତ କେତେ ଆସିବ? 65.46। ବୁଝିଲା? ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଲିଟରେସି ରେଟ୍ କଥା ଦେଖିବା ତ କେତେ ଆସିବ? 74.04। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ମାଡାଗାସ୍କର ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେସ୍ ଓସେନ୍। ମାଡାଗାସ୍କର ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେସ୍ ଓସେନ୍। କୋଉଟା ଆସିବ? Pacific Ocean, Southwestern India Ocean, Atlantic Ocean, Atlantic Ocean। ତ ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ ନା ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଓସେନ୍। ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଡେସ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସେପାରେଟ୍ସ ଦ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଜାଭା ଆଣ୍ଡ ସୁମାତ୍ରା। ପାକ୍, ମାଲାକ୍କା, ସୁନ୍ଦା, ମୋଜାମ୍ବିକା। କ'ଣ ହବ? ଇଏ ଆସିବ କ'ଣ ସୁନ୍ଦା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଦ ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଦ ଡେସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରିଭର ଇନ୍ ଦ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। କେଲାଣି ଗଙ୍ଗା, ଦେଦ୍ରୁ ଓୟା, କାଲୁ ଗଙ୍ଗା,
महाली गंगा कौन आसीबो ये आसीबो कौन महाली गंगा। नेक्स्ट देखो द लॉन्गेस्ट नेचुरल बीच इन द वर्ल्ड कॉक्स बाजार इज इन बांग्लादेश म्यांमार जापान स्विट्जरलैंड ये आसीबो कोडे ना बांग्लादेश रे। नेक्स्ट देखो दिस इज द ओनली एक्टिव volcano in South Asia. This is the only active volcano in the South Asia. Perumal Peak, Barren Island, Bartang, Narcondam Island. तो ये आसीबो कोन ना Barren Island. नेक्स्ट देखो which of the following mountain ranges is home to the second highest peak of the world K2? Pirpanjal Range, Eastern Karakoram Range, Ladakh Range, Jaskar Range. तो ये आसीबो कोन ना ईस्टर्न सॉरी ईस्ट काराकोरम रेंज पे देख बेरेन आइलैंड कौन अच्छी इंडियन सब कॉन्टिनेंट अच्छी है मन रखा को साउथ एशिया से दे दीची बुझला बेरेन आइलैंड आसीबो कोन इंडिया रे। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया कौन हम दैट इज आरावली रेंज। नेक्स्ट देखो कपिला धारा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन व्हिच रिवर तापी सारवती नर्मदा इंद्रावती दैट इज इन नर्मदा ओके। नेक्स्ट देखो देख बेले यार जदि देखा आम तो ये ओरिजिन कौट हो अमर कटक रिजन है अमर कंटक रिजन है स्टेट कौन हो एमपी है ये मन रखिए। नेक्स्ट देख कौन देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज पॉपुलरली नोन एज दक्षिण गंगा तुंगभद्रा गोदावरी पेरियार कृष्णा दक्षिण गंगा ये कौन गोदावरी। नेक्स्ट देख पे हिस्ट्री आमर कौन अच्छी पार्ट अच्छी देखिए कौन हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ ओडिशा ये आसो आप 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो देख 41 कही कौन व्हिच गंगा रूलर बिल्ड द वर्ल्ड फेमस कोणार्क टेम्पल नरसिंह देव वन ययाति केशर हरिवर्मा माधव वन तो कौन आसवे तो आसवे नरसिंह देव वन। देन नेक्स्ट देख द राइज ऑफ साराला युग in medieval Odisha is the most important contribution of which dynasty? The rise of Sarala Yuga in medieval Odisha is the most important contribution of which dynasty? Ganga, Gajapati, Mayurya, Marathas. आसब कौन ना गजपति डायनेस्टी। नेक्स्ट देख ड्यूरिंग उज रीजन मुर्शिद क्वाली खान बिकेम द गवर्नर ऑफ ओडिशा During which reign Murshid Quali Khan became the governor of Odisha? Akbar, Humayun, Babur, Aurangzeb. तो कौन हम ये औरंगजेब। नेक्स्ट देख which Nazims attacked the Jagannath temple of Puri? मोहम्मद ताक खान मोहम्मद बिन तुगलक अकबर औरंगजेब तो ये कौन मोहम्मद ताकी खान। नेक्स्ट देख व्हेन वाज उत्कल सभा एस्टाब्लिश्ड एट कटक व्हेन वाज द उत्कल सभा एस्टाब्लिश्ड एट कटक 1885 83 82 1982 तो ये आसो के 1882 जदि डेट देखा के आसो 1 अगस्त 16। नेक्स्ट देख
द कैपिटल ऑफ कलिंग अकॉर्डिंग टू जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर इन एंशिएंट टाइम वाज। द कैपिटल ऑफ कलिंग अकॉर्डिंग टू जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर इन एंशिएंट टाइम वाज। दानपुर, पाटलिपुत्र, संबलपुर, खोर्धा। ये तो कही कौन ना जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर रे कलिंगर कैपिटल कौन बोली मेंशन थिला हला बुझिला। ये आसीबो कौन दांतपुर। नेक्स्ट देखो रूलर डैश ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंगराज टेंपल। रूलर डैश ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंगराज टेंपल। तो किए स्टार्ट करथिले ययाति टू, धर्मराथ रथ, भीमरथ, जन्मजाया वन। ये हिजबे तो ये हिजबे कौन ययाति केसरी टू। नेक्स्ट देखो 48 कौन कहछि द प्री हिस्टोरिक नेम ऑफ ओडिशा वाज। द प्री हिस्टोरिक नेम ऑफ ओडिशा वाज। द प्री हिस्टोरिक नेम ऑफ ओडिशा वाज कोशल, कलिंग, पाटलिपुत्र, ओडिशा। तो ये आसीबो कौन ना कलिंग। नेक्स्ट देखो किंग अशोका बिकम बुद्धिस्ट आफ्टर ही वाज हॉरिफाइड विथ टायरेनी ऑफ द कलिंग वार इट वाज इन डेस बुझिला। तो सीधा सड़क आप क्वेश्चन बुझी पाना से कहया कथा कलिंग वार केबे हितला बोली पचारछि। तो ये आसीबो कौन 261 BC। नेक्स्ट देखो द कमिश्नर ऑफ ओडिशा ड्यूरिंग द फेमिन ऑफ 1866 वाज। लॉर्ड माउंटबेटन, डेलहाउसी, जॉर्ज चैंपले, नन ऑफ द अबव। तो ये आसवे कौन जॉर्ज चैंपले। नेक्स्ट देखो हु रोड संस्कृत ग्रामर। हु रोड संस्कृत ग्रामर पाणिनि, चरक, सारला दास, वेदव्यास। को तो ये आसवे के पाणिनि बुझिला 5th ରୁ 6th सेंचुरी BC बुझिला। जदि सेंचुरी आप पचारे तो सेंचुरी आप मन रखिए। हु कंपोज्ड द गायत्री मंत्र। हु कंपोज्ड गायत्री मंत्र। हु कंपोज्ड गायत्री मंत्र। तो ये आसवे कौन विश्वामित्रा। जदि आप पिला गायत्री मंत्र पचारे है सर्ट क्वेश्चन देख केमती आसपे। तो ये ऋग्वेदर कौन आसब ऋग्वेद बुझिला। ऋग्वेदर पुणी कौन थर्ड मंडल रे आसब कौन थर्ड मंडल रे आसब कौन ना गायत्री मंत्र बुझिला। गायत्री मंत्र आसब कौन ऋग्वेदर थर्ड मंडल रे आसब गायत्री मंत्र। नेक्स्ट देखो हु वर द फास्ट किंग टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। मयूरिश, इंडोग्रीक्स, मराठास, मुगल। किए जी देख पे ये क्वेश्चन अच्छी मुझे कहीदे इंडोग्रीक्स हम बुझला कौन ये देखिए हु वर द फास्ट किंग्स न लिखी आम लिखिपर कौन हु वर द फास्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया बुझला। जदि ताहले आम आसवा कौन इंडोग्रीक्स। जदि फास्ट इंडियन किंग हो फास्ट किंग हु वाइडली माने प्योर गोल्ड कॉइन प्रेजेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस इन इंडिया तो सी आसब कौन कृष्णा डायनेस्टी दैट इज कनिष्का बुझला। ये जिन आप मन रखिए है क्वेश्चन को प्रकार आसपे गोटे गोटे वार्ड रे भी आपंकर मिस्टेक हो पाए। हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। देख यही फेज अनुसार ये हम कौन इंडो ग्रीक्स हम है करेक्ट आंसर हम कौन 100% इंडो ग्रीक्स। नेक्स्ट हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। श्रीगुप्ता, स्कंदगुप्ता, रामगुप्ता, कुमारगुप्ता। फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी तो आसब कौन श्रीगुप्ता 319 रु कौन है स्टार्टिंग है गुप्ता इरा। नेक्स्ट देख which ruler founded the city of Agra। which ruler found the city of Agra। तो ये आसब कौन
सिकंदर लोदी। जदि ईयर आपन पचारे 1504। नेक्स्ट देख, द टेरिटोरी ऑफ द शैलोदभावा डायनेस्टी वाज नोन एज, द टेरिटोरी ऑफ द शैलोदभावा डायनेस्टी वाज नोन एज कलिंग डायनेस्टी, कलिंग मंडल, कंगोड़ दास, कंगोड़ देश, कंगोड़ मंडल। ये आसब कौन, कंगोड़ मंडल। नेक्स्ट देख, हु एमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड गंगा डायनेस्टी इन ओडिशा। तो 57 कही कौन, हु एमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड गंगा डायनेस्टी इन ओडिशा। कौन हम कुह, ये आसब कौन, भज्र हस्त भी बा 5। नेक्स्ट देख, गोविंद विद्यासागर, गोविंद विद्याधर recognized river Godavari as the boundary between Golconda and Odisha by signing a treaty with whom। देखो क्वेश्चन पे बुझ से कही गोविंद विद्याधर recognized river Godavari as the boundary between Golconda and Odisha by signing a treaty with whom। विद्याधर कौन करते ना गोदावरी को कौन करते गोलकोंडा ओडिशार बाउंड्री रूप में नहीं गोदावरी नदी को आउ साइन करते गोटे ट्रिटी है माने गोदावरी को कौन बाउंड्री गोलकोंडा और ओडिशार बाउंड्री रूप में। तो क्या सहित से ट्रिटी साइन करते सुल्तान ऑफ बेंगल, सुल्तान ऑफ ओडिशा, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, सुल्तान ऑफ मराठा, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा है ओबियसली ऑप्शन सी हो कौन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख, हरिशपुर द रीजन ऑफ फास्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इज इन बालेश्वर, पिपिल, जगतसिंहपुर, धामरा। हरिशपुर द रीजन ऑफ फास्ट ब्रिटिश सेटलमेंट इज इन बालेश्वर, पिपिली, जगतसिंहपुर, धामरा। आसब कौन जगतसिंहपुर। नेक्स्ट देख, 60 कौन कही, सुरेंद्र साय रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर इन 1833 फ्रॉम व्हिच रीजन ऑफ ओडिशा। तो सुरेंद्र साय कौन करते 1833 कौन करते विद्रोह स्टार्टिंग करते। तो सी कौ रीजन स्टार्टिंग करते विद्रोह, पुरी, कटक, केउंझर, संबलपुर। ये आसब कौन संबलपुर। नेक्स्ट देख बोले, तो ये अच्छे कौन ना जनरल इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो ये भी आपनर कौन 20 मार्क अच्छी, टोटाल आसब कौन 20 क्वेश्चंस। देख, व्हेन इज द इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड। 20th एप्रिल, 5th जून, 22nd एप्रिल, 3rd मार्च। तो आसब के एप्रिल 22nd है। देख जदि आम देखा तो ये फास्ट सेलिब्रेशन के होता 1970 रे डेट हो कौन सेम डेट हो। नेक्स्ट देख, गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन वेस्ट बेंगल, गुजरात, राजस्थान, आसाम। कोड अच्छी गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन वेस्ट बेंगल, गुजरात, राजस्थान, आसाम। तो ये आसब कौटे, ये आसब गुजरात। नेक्स्ट देख, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो भितर कोटा गोटे ग्रीन हाउस गैस नहीं। आम पढ़ी टोटल क्लाइमेट चेंजेस उपरे। तो ये आसब कौन ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देख पे मत खाली कमेंट बॉक्स रे कर सीओटा गोटे ग्रीन हाउस गैसेस और नॉट बुझला, कमेंट बॉक्स रे दब सीओ, सीओ इज ए ग्रीन हाउस गैस येस और नो है खाली येस और नो टाइप कर आ किसी ना जो मान येस से येस कर जो मैंने ना से नो टाइप करेंगे। मीना माता डिजीज was caused by eating fish which have a high level of arsenic, mercury, cadmium, all the above। तो ये आसब कौन ये मर्क्यूरी और परिमाण कौन हाइस्ट लेवल अच्छे। नेक्स्ट देख, which ISO सर्टिफिकेशन
pertains to the environment management system. तो ये आसीबो कोन 14001 ISO certification pertains to the environment management system. Next देखो, where was the first international earth summit held? Where was the first international earth summit held? Kyoto, Rio de Janeiro, New Delhi, New York. तो ये आसीबो कोडे ना रियो डी जेनेरियो हला वेयर कोन कहै छै वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड हाँ ठीक अच्छे ये हो कौन रियो डी जेनेरियो कंट्री कौन हो ब्राजिल हो बुझला ईयर के 1992 नेक्स्ट देखो वेयर इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड कोडे जीवो ये आसीबो डेराडून नेक्स्ट देखो 68 maximum ozone deflation has been observed in which of the following the north pole the south pole the equator none of the above maximum ozone deflation तो ये आसीबो कोडे ना साउथ पोल रे नेक्स्ट देखो 69 who was the pioneer of the चिपको movement of 1973 who was the pioneer of the चिपको movement of 1973 ये जे ना सुंदरीलाल भगना बुझला नेक्स्ट देखो which of the following is responsible for turning Taj Mahal yellow which of the following is responsible for turning Taj Mahal yellow sulfur chlorine nitrogen oxide sorry nitrogen dioxide sulfur dioxide तो ये आसीबो कोन ना सल्फर डाइऑक्साइड नेक्स्ट देखो इन आईपीसीसी व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर इन आईपीसीसी व्हाट डज पी स्टैंड फॉर तो कोन आसीबो ये आसीबो पैनल देखो फुल फॉर्म मन रखिबो कोन इंटर गवर्नमेंटल ला इंटर लिखि दो साइज रे दो देखो लिखि छु मोटे ला द इंटर गवर्नमेंटल है द इंटर गवर्नमेंटल पैनल है आईपीपी और आसब कौन ऑन क्लाइमेट चेंज बुझला आईपीसीसी मन रखिबा the dash contributes the maximum towards global warming so it is called a greenhouse gas dash contributes the maximum towards global warming so it is called a greenhouse gas nitrogen carbon dioxide oxygen methane तो ये आसब कौन ना कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट देखो dash destroys the greenhouse gas rain ozone sunlight wind तो ये आसब कौन सनलाइट नेक्स्ट देखिए द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट as a way of describing the mechanism of natural selections was coined by survival of the fittest coined by the term टा किए जाइछन बोली से पचार तो ये आसब कौन हर्बर्ट स्पेंसर नेक्स्ट देखो 75 ecology was first described as a separate field of knowledge in the year dash by the German geologist Ernst Haeckel. Ecology was first described as a separate field of knowledge in the year dash by the German geologist Ernst Haeckel. तो ये आसब के ना 1866 रे नेक्स्ट देखो dash species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area कौन है परियो
तो ये हो कौन एंडेमिक है स्थानिक है एंडेमिक मीन्स कौन स्थानिक जदि आप भोका पढ़ी थे यहाँ भी इजिली आपन नेक्स्ट देख व्हिच मेटल आयन रिलीज फ्रॉम द टेनरी इंडस्ट्री कॉजेस एक्यूट वाटर पॉल्यूशन कहतु कौन हो पार व्हिच मेटल आयन रिलीज्ड फ्रॉम द टेनरी इंडस्ट्री कॉजेस एक्यूट वाटर पॉल्यूशन तो ये आसो कौन सीआर सीआर तो यहाँ आसो कौन क्रोमियम नेक्स्ट देख व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन हो पार तो ये आसो कौन इनक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर नेक्स्ट देख वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी द हेगो नेक्स्ट आसला कौन नाइरोबी न्यूयॉर्क वाशिंगटन डीसी कौन हो पार हेडक्वार्टर ऑफ यूएनईपी तो ये कौन आसो नाइरोबी केनिया नेक्स्ट देख ये कौन कही द नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर where natural vegetation and wildlife exist is called the narrow zone of contact between the lithosphere hydrosphere and atmosphere where natural vegetation and wildlife exist is called the तो ये आसो कौन बायोस्फीयर नेक्स्ट देख पे ये हूँ कौन आपणर आसला आर्ट एंड कल्चर गोटे पार्ट तो ये भी आपणर कौन अच्छी ना टोटाल 20 क्वेश्चन विथ 20 मार्क्स देख कौन अच्छी हु ट्रांसलेटेड द महाभारत फ्रॉम संस्कृत टू ओडिया महाभारत कौन संस्कृत टू ओडिया किए ट्रांसलेट करते वेदव्यास वाल्मीकि सारला दास बलराम दास तो क्या आसबे दैट इज सारला दास नेक्स्ट देख वर्ल्ड फेमस ओडिसी डांसर केलुचरण महापात्र वाज बोर्न इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा पुरी खोर्धा बालेश्वर संबलपुर तो आसबे कौटे ना पुरी नेक्स्ट देख द उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर फॉर द प्रमोशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी ऑफ ओडिशा द उत्कल यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर फॉर द प्रमोशन ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इज सिचुएटेड इन व्हिच सिटी ऑफ ओडिशा भुवनेश्वर कटक राउरकेला संबलपुर ये आसो कौटे ना भुवनेश्वर नेक्स्ट देख ओडिशा डांस एकेडमी वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर इन ओडिशा ओडिशा डांस एकेडमी फाउंडेशन केबे हितला 70 1972 1974 1975 तार आंसर है जो केबे 1975 नेक्स्ट देख धनु यात्रा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू व्हिच गॉड और गॉडेस जगन्नाथ श्रीराम श्रीकृष्ण बलराम कौन हो पार आसो कौन श्रीकृष्ण नेक्स्ट देख द छठ पूजा फेस्टिवल इज डेडिकेटेड टू द डेश गॉड हनुमान शिवा सन श्रीकृष्ण तो ये आसो कौन ना सन नेक्स्ट देख मंजुली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मंजुली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ डेश सेप्टेम्बर नवेम्बर अक्टोबर जून तो ये आसो के ना नवेम्बर रे नेक्स्ट देख रज पर्व फेस्टिवल ऑफ ओडिशा इज द लिविंग कल्चरल हेरिटेज एंड एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ इट इज हेल्ड फॉर 3 days इन द मंथ ऑफ मे जून जुलाई मार्च तो ये आसो के ना जून मंथ रे नेक्स्ट देख विजयादशमी इज ऑल्सो नोन एज विजयादशमी ऑल्सो नोन एज ये आसो कौन दशहरा नेक्स्ट देख द विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड इन डेश सिटी विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज लोकेटेड इन डेश सिटी तो ये आसो कौन कन्याकुमारी
नेक्स्ट देखो रफ इज ए फोक डांस एसोसिएटेड विथ द स्टेट ऑफ रफ इज ए फोक डांस इज एसोसिएटेड विथ द स्टेट ऑफ तो ये आसीबो कोन आसीबो जम्मू एंड काश्मीर नेक्स्ट देखो कुमा टेम्पल लोकेटेड इन संबलपुर विथ स्ट्राइकिंग फ्यूचर तो कुमा टेम्पल विशेषत्व कौन पिले ओल्डेस्ट टेम्पल लेनिंग स्ट्रक्चर नागारा स्टाइल आर्किटेक्ट मेड ऑफ वुड कौन हो पारिबो तो ये आसीबो कौन लेनिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट देखो हाउ मेनी रॉक कट केव्स आर देयर इन उदयगिरी केव्स हाउ मेनी रॉक कट केव्स आर देयर इन उदयगिरी केव्स टोटल आसीबो केते ना 18 नेक्स्ट देखो व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ ओडिशा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ ओडिशा तो ये आसीबो कोडा अंशुपा नेक्स्ट देखो द तारा तारिणी टेम्पल एट पूर्णगिरी हिल्स इज सिचुएटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा गंजाम पुरी गजपति कोरापुट तो तारा तारिणी टेम्पल कोडा आसीबो दैट इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गंजाम नेक्स्ट देखो द पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश कंटेन्स वर्ड मीनिंग इन 4 लैंग्वेज ओडिया इंग्लिश हिंदी एंड तो पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश कौन ना 4टा लैंग्वेज को नहीं है कंटेन माने मीनिंगटा कौन 4टा लैंग्वेज लिखाई गोटे हूँ ओडिया इंग्लिश हिंदी आउ गोटे कौन बेंगाली है नेक्स्ट देखो नेम द फास्ट ओडिया पोएट हु इंडिकेटेड द टाइम एट व्हिच द क्लासिकल रेंजेस वर टू बी सॉन्ग सॉरी क्लासिकल रागस वर टू बी सॉन्ग नेम द फास्ट ओडिया पोएट हु इंडिकेट द टाइम एट व्हिच द क्लासिकल रागस वर टू बी सॉन्ग तो ये आसबे के ना जयदेव नेक्स्ट देखो द यूज ऑफ आर्ट इन म्यूजिक इज कॉल्ड ध्रुपद चित्रकला चित्रपद पांचल तो ये आसबो चित्रकला नेक्स्ट देखो इन परफॉर्मिंग द ओडिसी डांस व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप और फेज इन परफॉर्मिंग द ओडिसी डांस व्हिच द फर्स्ट स्टेप और फेज ये आसबो कोन मंगल चरण नेक्स्ट देखो द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन इज नोन बाय व्हिच अदर नेम इन ओडिशा गम्हा पूर्णिमा दोल पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा नन ऑफ दिस तो ये आसबो कोन नेम ऑफ गम्हा पूर्णिमा ओके तो पिला माने ये थिला आज आपनर कोन ना टोटल 100 क्वेश्चंस है जनरल स्टडीज रो आपन टोटल थिला कोन 100 क्वेश्चन आशा करछि आपन को वीडियोटा भल लागि थिबो यदि आपन को वीडियो भल लागिछि वीडियो भल ताले वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे जय हिंद वंदे मातरम।